नमस्कार आपको स्वागत करुच्ची अड्डा 24/7 ओपीएससी चैनल रे आपण माने देखि परथबे लगातार भाव रे मैं मंजिल सीरीज रे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस नहीं के आसुछु आपण मानक पई सो दैट आपण को पई प्रीलिम्स इजी करिवा पई आज किछि 25 एमसीक्यूज बेस्ट एमसीक्यूज देखिबा तो जेहेतु पोस्टपोन होईछि एग्जाम तो आम चेष्टा करूँ मैक्सिमम रिविजन करने कारण रिविजन माध्यम ही आपणकर जो कॉन्सेप्ट्स गुड़िक अच्छी ताको आपण कंसोलिडेट करें सो एबे जो प्रोसेस अच्छी दैट इज द कंसोलिडेशन नुआ जिनस से पढ़ा दरकार नहीं जहाँ आप ऑलरेडी पढ़ी बस रिवाइज करंतु एवं कंसोलिडेट करंतु ठीक अच्छे से कंसोलिडेशन रो प्रोसेस रे आमे मध्य आपनको सहाय्य करूछु या लगातार भाव रे यूट्यूब रे सेशंस गुड़िक नहीं आसु तो आज आउ गोटे नुआ सेशन रे आपनको स्वागत करुछु जो मैंने ऑनलाइन अच्छा प्लीज शेयर करनियंतु आपनको फ्रेंड्स मानक सहित जो मैंने आपन सहित एग्जाम भी दौरान सो दैट से मानक हेल्प करिवो ठीक अच्छे चलतु स्टार्ट करवा डिस्कशन को स्टार्ट करिवार पूर्व आपण माने जानिछंती हमें प्रतिदिन या प्रति सेशन रे गोटे मोटिवेशनल कोटेशन देखो आज मोटिवेशनल कोटेशन कौन अच्छी डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट काफी स्ट्रॉन्ग एसेंस ये कोटेशन रे अच्छी जदि आपण कोटेशन को आउथरे पढ़िबे डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप आपण जो फसल डेली काटुचंती ताकू देखंतु नहीं या ताकू जज करंतु नहीं मो फसल भलो काटुची या फसल मोर भलो होउची ना नहीं या जो फसल मु काटुची से फसल भलो हेइची ना नहीं बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट फसल ये सिंपली माने होची जो आपनकर गीतारे कहा जाउची आपण फल को ध्यान कम देकी कर्म प्रति अधिका ध्यान दियंतु सिंपल जिनस एटा फल को अधिका ध्यान न देकी कर्म को अधिका ध्यान दियंतु सिपे कहूँ डोंट जज ईच डे बाय हार्वेस्ट यू रीप बाय द सीड्स दैट यू प्लांट तेणु जो मंजी आपण बुणुचंती मंजी जो पकाउचंती जो एफर्ट आपण दउचंती सेठी आपण अधिका फोकस करंतु दैट इज व्हाट दिस कोटेशन इज ऑल अबाउट ठीक अच्छे इकोनॉमी डिस्कस करिबा मिक्स्ड ऑफ क्वेश्चंस रहइबो तेणु को गोटे पर्टिकुलर टॉपिक नहीं इकोनॉमी डिस्कस करूछु मिक्स्ड ऑफ रहइबो एवं मु चेष्टा करिबी जो एरिया गुडिक फोकस या मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज गुडिक सेही गुडिक ही फोकस करिबा पई जेमति मनी एंड बैंकिंग हला बजट हला ए सब टॉपिक्स को कवर करिबी आ नेक्स्ट 1 आवर आमे डिस्कस करिबा यो जो मोर टेलीग्राम चैनल रो एक्सेस आपण एठी स्कैन करि परिबे एटाको स्कैन करिके मोर टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करि परिबे फैमिलीज हमर फैमिली धीरे धीरे ग्रो करूची एठी आपणकर जहाँ भी मटेरियल फ्रीली अवेलेबल अच्छी ओडिशा कंटेंट हो बाकी जहाँ भी आपण आम देखु क्लास रे जहाँ भी डिस्कस करूछु ताकू आपण फ्रीली आपण को मिल जिवो प्लस इंस्टाग्राम रे भी मध्य आपण मध्य फॉलो करि परिबे रिगार्डिंग और प्रिपरेशन डाउट कंफ्यूजन जहाँ भी अच्छी चलंतु स्टार्ट करिबा 11 AM रे आम डिस्कस करूछु स्लाइटली डिले जेहेतु करंट अफेयर स्लाइटली डिले एंड हला तो तापरे सेशन आम स्टार्ट करूछु फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज आर करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज करेक्ट फर्स्ट देखिबा स्टेटमेंट मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड टू कंट्रोल ए नेशंस ओवरऑल मनी सप्लाई एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट स्टेटमेंट कोन कहूची ना गोटे कंट्री रो ओवरऑल मनी सप्लाई को से कंट्रोल करूची and the second one is promote economic growth को भी से promote करूची encourage करूची या economic growth को से करूची it is exclusively implemented by the US Federal Reserve and does not involve other government bodies like the US Treasury. Second, monetary policy can be expansionary or contractionary depending on the economic conditions.
economic conditions. Monetary policy simply जदि आपण देखिबे गोटे कॉन्सेप्ट अछि मॉनेटरी पॉलिसी तेणु एक तो नेशंस ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करूछि मु जेमति आपण कहली इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कंट्रोल करूछि सेट पे फर्स्ट स्टेटमेंट होछि करेक्ट जेमति हमें कहूजे इट इज एक्सक्लूसिवली इंप्लीमेंटेड बाय द यूएस फेडरल रिजर्व एंड डज नॉट इन्वॉल्व अदर गवर्नमेंट बॉडीज लाइक द यूएस ट्रेजरी आपण इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे भी देखंतु ये यूएस कॉन्टेक्स्ट रे लिखा जाई एटा बट इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे भी देखंतु जदि मॉनेटरी पॉलिसी देखिबा हमें मॉनेटरी पॉलिसी रे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को हमें देखि परिबा जोटा कि 2016 रे इंप्लीमेंट करा जाइतला मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को जदि हमें देखिबा सेठी दुईटी सेक्शंस अछंती गोटे होची आरबीआई रो रिप्रेजेंटेटिव सेठी रहउचंती एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो रिप्रेजेंटेटिव भी रहउचंती तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि 2016 पूर्वरु एक्सक्लूसिवली दैट इज कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई एक्सक्लूसिवली आपण कहि परिबे वर्तमान एक्सक्लूसिवली और कंट्रोल नाही डेफिनेटली सेठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो भी ओपिनियन मैटर्स बिकॉज आपण जानि थिबे 3:3 या 6 मेंबर कमिटी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑलरेडी हमें डिस्कस करिचे तनो एक्सक्लूसिवली फेडरल रिजर्व नुहे यूएस रो किंबा आरबीआई नुहे इंडिया रो सेठी गवर्नमेंट रो भी रहुची रोल monetary policy can be expansionary or contractionary depending on the economic conditions absolutely correct it depends on the economic conditions what is the meaning of this economic conditions for example let's see suppose inflationary situation is there तो एठी हमें कौन अडॉप्ट करिबा एठी को मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करिबा our objective is to control inflation so for that what we have to do we have to adopt the contractionary monetary policy how to adopt this contractionary monetary policy तो सेतबेला हम कोन करिबा को पड़िबो we have to increase the repo rate माने कोन the rate at which commercial banks take loan from the RBI तो एटा होची contractionary सेमते आपण डिप्रेशन या रिसेशन जदि चली डिप्रेशन या रिसेशन जदि चली सेठी हमको को मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करबा को पड़िबो सेठी हमको अडॉप्ट करबा को पड़िबो expansionary what is the meaning of expansionary that means you have to reduce the repo rate जहाँ को हमें policy rate बोली को you have to reduce the repo rate so that बैंक रो जो borrowing cost of borrowing अछि that would be come down cost of borrowing यदि कमिला definitely से माने कोन करिवे जो consumer पई जो borrowing होछि तार भी rate कमेबे and people will have more money they can invest more money in the economy are you getting my point तेनु expansionary and contractionary दुईटी जाक options अछि monetary policy रो तेनु 1 and 3 is the correct answer B right देखो monetary policy aims to control the overall money supply and promote economic growth second is incorrect while the US Federal Reserve implements monetary policy other government bodies like US Treasury through the fiscal policy also play a role in managing economic growth तो फेडरल रिजर्व यानी कि मॉनेटरी अथॉरिटी सहित जो गवर्नमेंट भी अच्छी से भी part of that process monetary policy can be expansionary and contractionary which of the following are tools used by the Reserve Bank of India to implement monetary policy which are tools used by the Reserve Bank of India to implement monetary policy options गुडी को देखिबा open market operation reserve requirements discount rate and income tax rate से कुछ monetary policy रो को गुडी को instruments first देखंदु open market operation quantitative tool reserve requirements again the same quantitative tool but
जोटा को आम कहे CRR एंड SLR। थर्ड टी कौन अच्छी डिस्काउंट रेट। ये डिस्काउंट रेट कोटा आपण बैंक रेट को डिस्काउंट रेट को भी कही पारंती जोटा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आम डिस्काउंट करू या कमर्शियल बैंक्स गुड़िक जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छी ताको डिस्काउंट करती क्या सहित RBI सहित। तो इंटरेस्ट रेट भी एठी भी मैनेज करा जाए बैंक रेट जोटा आम कहे। इनकम टैक्स रेट ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट फिस्कल पॉलिसी। सो आंसर कौन हम 1 2 3 हम ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे। मनी बैंकिंग क्वेश्चन ओपन मार्केट ऑपरेशन दिस इज अ टूल वेयर फेडरल रिजर्व बाइज और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई और फेडरल रिजर्व एटा यूएस कॉन्टेक्स्ट रे इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे ऑब्वियसली RBI। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स this refers to the proportion of deposits that banks must hold in reserve which influences how much money they can lend out। एटा को SLR बोली जोटा हमें कहूचे। banks maintain a reserve with themselves जदि RBI सहित हैला that is CRR। discount rate this is the interest rate charged by the Federal Reserve to commercial banks for short term loans। तेणु short term loans पाई discount rate कहूची जोटा कि हमें RBI कॉन्टेक्स्ट रे भी जब देखिए डिस्काउंट रेट कोटा जोटा मुझे जमती आपन कहली बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हमें कौन करू ताकू डिस्काउंट करू यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज रे इशू करा जाए। ठीक अच्छे। इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे देखिबा एवं इनकम टैक्स रेट ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी नॉट मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स कैन बी अचीव्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा को गोल को आम अचीव करि परिबा ये होची क्वेश्चन। फर्स्ट होची रिड्यूस इन्फ्लेशन। कॉन्ट्रैक्शनरी द्वारा कौन हम देखो मु आउ टिके स्लाइटली तको एलाबोरेट जदि करबी गोटे अछि क्वांटिटेटिव थ्योरी गोटे अछि क्वांटिटेटिव मॉनेटरी थ्योरी कहा जाए ताको। क्वांटिटेटिव मॉनेटरी थ्योरी को है कि if you increase money supply in the economy, then price level starts increasing in the economy। ये price level केमती starts हुए ना people will have more money, they will start demanding more goods and services, so demand for goods and services which is greater than the supply of goods and services, as a result price starts increasing। This is the fundamental principle जोथि पाई कि you will find inflation in the economy, right। तो माने होची जितकी फास्टर लोक मानकर कंजप्शन कैपेसिटी रे इंक्रीमेंट हुए या इंक्रीज हुए सेतिकी फास्ट रे प्रोडक्शन बढ़ी पारे नाही। सो देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन दिस कंजप्शन एंड प्रोडक्शन एंड दैट इज द रीजन यू विल फाइंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जोथि पाई कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपन को देखिबा को मिले जोटा कि हम इन्फ्लेशन बोली को। सो टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू अडॉप्ट व्हाट contractionary monetary policy। what we have to do we have to adopt contractionary monetary policy। and what is that contractionary monetary policy we have to reduce the money supply। ठीक अछि। तो ये होची गोटे ऑब्जेक्टिव contractionary। सेकंड डिक्रीज द मनी सप्लाई। सेकंड से कौन कहूची डिक्रीज द मनी सप्लाई। यस और नो एब्सोल्युटली यस। तो कॉन्ट्रैक्शनरी माने कौन मुझे जमते कहली मनी सप्लाई को आपको कम करने को पड़ो डिक्रीज द मनी सप्लाई। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट नो कारण अनएम्प्लॉयमेंट कम हम ना लोअर अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट द आप कहींपर ऑब्जेक्टिव बट ऑब्जेक्टिव कौन कॉन्ट्रैक्शनरी रिड्यूस इन्फ्लेशन एंड डिक्रीज इन मनी सप्लाई। तो आंसर इज व्हाट ए 1 and 2 ओनली राइट।
Statement 1 is correct. Contractionary monetary policy aims to reduce inflation by controlling money supply and raising interest rate. Controlling money supply and raising interest rate. This is the meaning of what? This is what we call the reduce inflation. Contractionary, controlling money supply, raising interest rate. Contractionary monetary policy means. Second, one of the primary effects of contractionary policy is a decrease in the money supply, often achieved through the sale of government securities and increasing reserve requirements. तार सिंपली माने कौन ना आपण दी सीआरआर जदि बढ़ाई देवे, एसएलआर बढ़ाई देवे, तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई कौन हो कमी जीवो. That will reduce the money supply. Third, कौन कहूचे contractionary monetary policy can increase unemployment in the short term as it is typically reduces demand and slows economic growth. But in long term, definitely it would increase the employment. Right? तो unemployment short term रे ही पारे कारण जेहेतु production ऊपर slightly impact पड़ी पारे. Short term रे unemployment ही पारे, but longer term रे अपन को employment generation से करेगा. Next, what is the role of Reserve Bank of India in monetary policy? Role of Reserve Bank of India. Role. Let's see. It controls the money supply. It controls the money supply. Role of Reserve Bank of India in monetary policy. It controls money supply either to increase or decrease. Either to increase or decrease. Role. Second, it directly implements fiscal policy. Second se kuchi, it directly implements fiscal policy. Third, it adjusts interest rates to influence borrowing and spending. Obviously, first hoji absolutely correct. Second, absolutely not correct in fact. Third hoji adjust interest rate to influence borrowing and spending. तो लोक मानकर जो परचेजिंग कैपेसिटी हो या इकोनॉमी रे मनी सप्लाई केते रहिबो ता मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा ही डिटरमिन करा जाए. That is determined through the money supply. So in this case you can say yes. So answer is 1 and 3. Answer is 1 and 3. 1 is correct. Reserve Bank of India controls the money supply through tools like interest rates, reserve requirements, and open market operations. Statement 2 is incorrect. The Reserve Bank of India does not implement fiscal policy, which is responsibility of the government of India. Third, by adjusting interest rates. Adjusting interest rate means जो repo, reverse repo इस सब जिनसे कोड़ी कहची, that is decided by the RBI. Which of the following are correct about the fiscal policy? Which of the following are correct about the fiscal policy? First, fiscal policy refers to the use of government spending and tax policies to influence macroeconomic conditions. First कौन कहूची fiscal policy refers to use of government spending and tax policies. ये होची key terms आपनकर. जदि फिस्कल पॉलिसी आपण देखिबे फिस्कल पॉलिसी रे दुईटी जिंस अछि गोटे होची पब्लिक एक्सपेंडिचर जोटा कि हमें कहूचे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आउट होची टैक्स. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ए पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा को कहूचे the money which is spent by the government, the money which is spent by the government on different programs you can say, schemes, policies, infrastructure, etc. Public expenditure. And other one is the tax. Tax means what we call the direct tax, जोटा कि हमें income tax, corporation tax बोले कहूचे. Another one is indirect tax. Direct tax and indirect tax. So fiscal policy refers to the use of government spending and tax policies. Government spending and tax policies, that is known as fiscal policy. Expansionary fiscal policy involves
increasing taxes and reducing government spending. What is the meaning of expansionary fiscal policy? Expansionary fiscal policy means, again, people will have more money to spend in the economy. Expansionary fiscal policy. So how is it possible? When we say expansionary fiscal policy, that means it has two aspects. One is the public expenditure should be increased. That means government should spend more on what we call the infrastructure, schemes, initiatives, policies, etc. For example, MGNRGA, Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Act, National Food Security Act. Through these what we call the welfare schemes, government should invest or should spend more. Yuji first answer. Second aspect Yuji, tax reduction. That means reducing the tax rate. If you will reduce the tax rate, then people would have more disposable income. जो मैंने disposable income जानी नांती, let me explain for them. Disposable income means simply आपनकर personal income or आपनकर individual income of an individual minus tax आपन कोई परिवे, minus tax, that is disposable income after paying the tax. तेणु tax जदि कम आपण दउछन, you will have more money. Tax जदि आपण अधिका दउछन, then you will have less money. ये होची disposable income. तेणु expansionary माने कोन? People will have more money. How? Now, if public expenditure increases and tax decreases, that is known as expansionary fiscal policy, involves increasing taxes and reducing government spending. Third, contractionary fiscal policy. तो ये जो स्टेटमेंट रे कोन अछि, इंक्रीजिंग टैक्स अछि एंड रिड्यूसिंग अछि, ऑब्वियसली स्टेटमेंट इनकरेक्ट बोली आपण कहि परिबे. ठीक अछि. एक्सपांशनरी माने होछि कोन, पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड इंक्रीज. एटी कोन कहूछि से रिड्यूसिंग, तो सिंपली रिवर्ट्स कहूछि, तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट. थर्ड देखो, contractionary fiscal policy aims to decrease aggregate demand by increasing government spending and cutting taxes. Obviously ये भी reverts कहूछि. तमने ई स्टेटमेंट ही ठीक हबो जेतोले एठी हम लिखिबा एक्सपांशनरी, ये स्टेटमेंट ही ठीक हबो जेतोले एठी हम लिखिबा कॉन्ट्रैक्शनरी. Okay, then answer is obviously one only. One is correct. Fiscal policy involves the use of government spending, tax policies to influence the economy, particularly to stabilize the economic conditions, manage inflation, and control employment. Particularly stabilize economic conditions and manage inflation and control the employment. This is statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. Expansionary fiscal policy actually involves increasing government spending and reducing taxes. Discuss samekal. Third is incorrect. Contractionary means increasing taxes and reducing government spending. Okay. Next. Which of the following are typical tools used in expansionary fiscal policy? Which of the following are typical tools used in expansionary fiscal policy? Lowering taxes, se kuchi expansionary. First one is lowering taxes se kuchi. Second kuchi increasing government spending. Third kuchi increasing interest rate. Expansionary means lowering taxes, that means people will have more money. Second se kuchi increasing government spending, that means more money should go into the hand of people. Increasing government spending. And third is increasing interest rate, that means contractionary monetary policy.
So answer is what? Answer is 1 and 2 A only. Okay. Statement 1 is correct. Lowering taxes increases disposable income for consumers and businesses, boosting consumption and investment. The stimulating economic activity. Statement 1 is correct. Statement 2 is correct. Increasing government spending, such as through public infrastructure projects, increases government aggregate demand and create jobs, further stimulating the economy. Statement 3 is incorrect. Increasing interest rates is part of the monetary policy and not fiscal policy. Fiscal policy relies on government spending and taxation. Okay. Whereas monetary policy involves central banks managing interest rates and the money supply. Next, what is the main goal of contractionary fiscal policy? Main goal of contractionary fiscal policy. Contractionary means less money with the people. That means goal कौन? Goal होची first देखो से होची reduce inflation, decrease unemployment, increase government spending. Third देखो to increase government spending. तो contractionary माने कौन? Obviously reducing the government spending. So you can easily eliminate this. Decrease unemployment. Decrease unemployment. So obviously contractionary fiscal policy रो केबी भी goal होबो नहीं कि we will decrease unemployment. So again you can eliminate this. Only option is left is to reduce inflation. So this aspect is correct. I mean A1 only. The goal of contractionary fiscal policy is to reduce inflation by decreasing aggregate demand. This is typically done by increasing taxes and reducing the government spending. Increasing taxes and reduces government spending. Statement 2 is incorrect. Contractionary fiscal policy typically increases unemployment in the short term as it involves reducing demand in the economy, but in the long run definitely it will increase the employment opportunity. Statement 3 is incorrect. Increasing government spending is characteristics of expansionary fiscal policy, not contractionary. Next, according to Keynesian economics, Keynes good economist thile jiki janga na hochi John Maynard Keynes. John Maynard Keynes से माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट देइथिले से फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आपण कहि परंदी माइक्रो इकोनॉमिक्स ओके उडो छै आपनकर माइक्रो आउट होछि मैक्रो ये होछि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट डू ड्यूरिंग ए रिसेशन टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी रिसेशन समय रे कोन करिबा दरकार एटा सरकार कोन करंती जनरली ठीक है फर्स्ट हो जी डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू बैलेंस द बजट सेकंड से कहूँ इंक्रीज टैक्सेस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन थर्ड से कहूँ इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड लोअर द टैक्स रेट टू बूस्ट डिमांड 1930 जो ग्रेट डिप्रेशन आसला 1929-30 रे स्पेसिफिकली ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन या रिसेशन जो आसला से जगह रे केन्स सजेस्ट करथिले कोन ना मार्केट रे डिमांड क्रिएट करिबा पे डिमांड क्रिएट इन द सेंस कि पीपल शुड डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज कारण जेहेतु पीपल डिड नॉट हैव मनी तेणु से मार्केट रे डिमांड नथिला यानी कि दे कैन नॉट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज सो व्हाट केन्स सजेस्टेड टू क्रिएट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज during this recession. That means जदि आपण डिमांड जनरेट करिवे डिमांड क्रिएट करिवे then people will purchase more goods and services. That means demand will increase and then obviously
and obviously uh, the factories, the industries, they will start producing, so production will increase. ଯେତେବେଳେ production start ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର economic situation improve ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା let's give more emphasis on the demand generation or demand creation, creating more demand। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଯେମିତି ଆସିବ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ପସିବୁଲ୍ କେମିତି increase government spending and lowering taxes to boost demand, increasing government spending and lowering taxation to boost demand। okay, so third option जदि आपण देखिबे third option is correct। first option second option देखंतु से कहूची decreasing government spending, contradicting the third one, increasing taxes to control inflation। तो obviously आपनकर रिसेशन ही अछि ताको आपण कंट्रोल कोन आउ करिवे, तो आंसर इज सी थर्ड ओनली। ओके, so Keynesian economics suggest increasing government spending during a recession, not decreasing it। statement 2 is incorrect। during a recession Keynesian advocate for lower taxes to stimulate consumer spending and business investment। statement 3 is correct। Keynesian economics argues that increasing government spending and cutting taxes can boost aggregate demand, helping the economy to recover from recession। next, which of the following statements regarding the union budget of India are correct? Union budget, the union budget is classified into revenue budget and capital budget। यूनियन बजेट जो आपनकर अछि तार दुईटी कंपोनेंट अछि आपण देखिथिबे, गोटे होची आपनकर रिसिप्ट और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अछि। तो से रिसिप्ट एंड रेवेन्यू को जदि रिसिप्ट और रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर को डिवाइड करिवे तो दुईटी अछि, गोटे होची रेवेन्यू रिसिप्ट आ गोटे होची कैपिटल रिसिप्ट। सेमते एक्सपेंडिचर भी आपण देखिबे, गोटे अछि आपनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गोटे होची रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सित पे से कहूची गोटे होची रेवेन्यू बजेट आ गोटे होची कैपिटल बजेट। ठीक अछि, सेकंड देखिबा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्लूड लोन्स फ्रॉम पब्लिक, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड आरबीआई। रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्लूड लोन्स फ्रॉम पब्लिक, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड आरबीआई। थर्ड से कहूची रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड on the development of infrastructure and public services। revenue expenditure is incurred on the development of infrastructure and public services। यार आंसर कौन होबो कि यदि आंसर करि परिबे, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ही होची करेक्ट, कोनोसी इस्तर डाउट नै। मु जेमति आपन एटी कहली रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड टी को देखंतु रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड लोन्स फ्रॉम पब्लिक, फॉरेन गवर्नमेंट एंड आरबीआई। जदि अपन रेवेन्यू रिसिप्ट को देखुचंदी तार मेन सोर्स गुडी को कोन, रेवेन्यू रिसिप्ट्स रो मेन सोर्स टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स एंड नॉन टैक्स यूजी रेवेन्यू रिसिप्ट्स रो सोर्सेस, टैक्स एंड नॉन टैक्स, नंबर 1। नंबर 2 हुची कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट रो सोर्सेस गुडी को कोन, कैपिटल रिसिप्ट्स रो सोर्सेस गुडी को कोन से हुची गुडे लोन्स फ्रॉम पब्लिक, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड आरबीआई। लोन फ्रॉम पब्लिक, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड आरबीआई, these are capital receipt, not revenue receipt। okay, revenue expenditure is incurred on the development of infrastructure and public services। देखो जदि आम एक्सपेंडिचर पार्ट को देखिबा, ये तो रिसिप्ट पार्ट टी मु आपन को कहली, जदि आपण एक्सपेंडिचर पार्ट को देखुचंदी सेठी दुईटी एक्सपेंडिचर पार्ट अछि, गोटे होची रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और गोटे होची कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपली माने कोन ना, सिंपली टू रन द डे टू डे गवर्नमेंट,
to run day-to-day government. To run day-to-day government. That means revenue expenditure होची subsidies, salaries, defense expenditure ये सब जिनस गुड़िक आपंकर हूँ सब्सिडीज आसो सपोज आप कौन सी लोन नहीं तार इंटरेस्ट पेमेंट पेंशन राइट सो दीज आर व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर माने कौन सिंपली द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आपण स्कूल्स कॉलेजेस बिल्डिंग्स रोड्स रेलवेज ये सब जिनस गुड़िक हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर तेणु जेहेतु से गुड़िक कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कौन कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेस ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्लाइटली अच्छी पब्लिक सर्विसेस जदि अच्छी तेबे आपण सिंपली कहि परिबे सेटा होची रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे जीवो पब्लिक सर्विसेस इन द सेंस कि सपोज कौन सी स्कीम बाबद रे जो खर्च करूछन सब्सिडीज रे खर्च करूछन राइट से गुडी को आपनकर कोथरे जीवो सेटा जीवो आपनकर पब्लिक सर्विस रे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर होची आपनकर सिंपली व्हाट यू कॉल द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तेणु से हिसाब रे देखिबा गले द स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट आंसर होची आपनकर कोन A1 ओनली ठीक अछि एटा इनकरेक्ट हो ओके मूव टू द नेक्स्ट मैं डिस्कस तो कर दीजिए ताको नेक्स्ट which of the following statements regarding revenue and capital budgets are correct revenue and capital budgets देखिए revenue budget includes government's tax and non-tax revenue capital budget includes expenditure and day-to-day operations of the government fiscal deficit is incurred when total expenditure exceeds total revenue your answer कौन होगा anyone can give answer revenue budget includes what revenue receipt माने जोटा कि revenue सरकार पाखकु जोटा राजस्व आसुची revenue receipt income भी आपण कहि परिबे आउट होची capital receipt revenue receipt रे कोन अछि tax and non tax तो सही हिसाब रे देखिबा गले दिस वन इज करेक्ट revenue budget okay revenue budget रे ही अछि tax and non tax although specifically revenue receipt रे अछि second कोन ना capital budget includes expenditure and day to day operations of the government this is absolutely incorrect why because day to day operations यदि आपण देखिबे सेटा कोन अछि revenue expenditure डे टू डे ऑपरेशन पाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हाई ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे डे टू डे ऑपरेशंस रे कोन अछि सब्सिडीज इंटरेस्ट पेमेंट सब्सिडीज इंटरेस्ट पेमेंट आउ कोन अछि पेंशन सैलरी डिफेंस एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा फिस्कल डेफिसिट इज इनकर्ड व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू टिके ध्यान देवे आपण माने फिस्कल डेफिसिट क्वेश्चन टी मतलब लगुच लास्ट 10 वर्ष 12 वर्ष भितर 6-7 थर पचारची तो से कांसेप्ट को क्लियरली बुझिबा पे चेष्टा करबी टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू से कहूची राइट जेतला हम टोटल एक्सपेंडिचर कहूछु इट इंक्लूड्स व्हाट रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू हमें कोटा कहूचे रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट ता माने एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम ठीक अछि एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम तबे सिंपली एटा को हमें कहिबा बजट डेफिसिट एटा को हमें कोन कहिबा बजट डेफिसिट बट व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट बोले कहा कहबा टिके एठी प्लीज पे योर अटेंशन
जिते आम कैपिटल रिसिप्ट कौचे रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट एटा हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम सॉरी एटा एक्सपेंडिचर अच्छे ना तो एटा हम एक्सपेंडिचर एटा हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट एटा हम रिसिप्ट एटा हूँ रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट ठीक अच्छे ये देखो एक्सपेंडिचर अच्छी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आउ कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छी ये रिसिप्ट को देखा गोटे हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट आ गोटे हूँ कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट रे आपण देखिबे कोन ना गोटे सेगमेंट अच्छी जोटी की बोरोइंग इंक्लूड करा जाइछ if you see the capital receipt you will find there is one component known as borrowing capital receipt रे borrowing from different sources borrowing जोटे सरकार करो बोरोइंग को आमे कैपिटल रिसिप्ट रे रखुचे बुझुची जिनसेटा तेणु जो आम फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करूँ जदियो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम या एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट हुए बट से रिसिप्ट जगह बोरोइंग को आम कौन करूँ एक्सक्लूड करूँ वी एक्सक्लूड दिस व्हाई ना बोरोइंग इज ए लायबिलिटी बोरोइंग टा हमर केबे रेवेन्यू या इनकम रे जीवन इट्स ए लायबिलिटी तेणु जो फिस्कल डेफिसिट आम कैलकुलेट करूँ we simply exclude this borrowing component जोटा कि बजेट डेफिसिट रे हमको सेते एग्जैक्ट आइडिया या इंफॉर्मेशन मिले नाही बजेट डेफिसिट होची कोन सिंपली एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम बट जले फिस्कल डेफिसिट रे हमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग हमर डेफिशिएंसी या डेफिसिट केते अछि तनु फिस्कल डेफिसिट होची मन रखतिबे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट से टोटल रिसिप्ट रु बोरोइंग को इंक्लूड जो आपनकर अछि सेटा को आपण एक्सक्लूड करिवे फिस्कल डेफिसिट बेल को या फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट कला बेल ठीक अछि तो फर्स्ट आंसर एठी कोन हबो फर्स्ट होची करेक्ट सेकेंड होची ऑफ कोर्स इनकरेक्ट थर्ड होची फिस्कल डेफिसिट इज इनकर्ड व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू इट माइनस या एक्सक्लूडिंग बोरोइंग हेतिले आहुरी बेटर हेतांदा ठीक है बोरोइंग हेतिले आहुरी बेटर हेतांदा तो एठी 1 एंड 2 ऑप्शन सॉरी 1 ओनली जो ऑप्शन अछि सेटा ही आपनकर करेक्ट आंसर बोले आपन कहि परिबे कैपिटल बजेट एटा रॉन्ग हेगला एटा भी रॉन्ग अछि फर्स्ट इज करेक्ट ओनली 1 इट भी करेक्ट लिखा है किंतु एटा ओनली 1 हबो 1 ओनली इनकरेक्ट ओके नेक्स्ट व्हाट does a fiscal deficit indicate in the context of India's union budget India's union budget रे fiscal deficit कौन indicate करूची The government's total expenditure exceeds total revenue. The government's capital receipt and capital receipts are higher than its capital expenditure. The government has sufficient tax revenue to cover all its expenditures. Okay. So first देखिबा first होची the government's total expenditure exceeds its total revenue. Absolutely correct. किछि problem नहीं. एक्सपेंडिचर जदि आम बोरोइंग को एक्सक्लूड करूचे बट आपन को से गोटे आइडिया दउची आपनकर खर्च केते होउची आपन आय ठारू खर्च केते अधिका होउची सेकंड कहूची द गवर्नमेंट्स कैपिटल रिसिप्ट आर हायर दैन इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट इज हायर दैन इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्जाक्टली ये जिनस रो इनफॉरमेशन आपन को मिलिबो नाही कारण एटा ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू विषय में डिस्कस करूचे टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर तो यार एग्जैक्ट इनफॉरमेशन आपण पाई परिबे नाही फिस्कल डेफिसिट थर्ड द गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट टैक्स रेवेन्यू टू कवर इट्स ऑल एक्सपेंडिचर ई जिनसे आपण सिंपली रेवेन्यू एस्पेक्ट रो पाई परिबे रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट को जदि आपण कैलकुलेट करंती या कंपेयर करंती फिस्कल डेफिसिट रू ए जिंस आपण को मिली परिबो नाही ठीक अछि तो एठी सिंपली कोन देखिबा आंसर होची कोन ना आंसर होची आपनकर वन ओनली ठीक अछि आंसर होची आपनकर वन ओनली ए नेक्स्ट which of the following statements regarding the green climate fund is are correct green climate fund the green climate fund aims to assist developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change green climate fund second the green climate fund is established under the aegis of UNEP OECD Asian Development Bank and World Bank ठीक अछि तो द ग्रीन क्लाइमेट फंड रो मेन उद्देश्य कोन उद्देश्य होची जो डेवलपिंग कंट्रीज गुडी को अछंदी क्लाइमेट चेंज फल रे सेमान को ऊपर जो प्रभाव पडुची फॉर एग्जांपल वर्षा रो इरेगुलारिटीज आपण देखुतबे क्लाइमेट चेंज फल रे लेट्स से मेल्टिंग ऑफ आइस कैप क्लाइमेट चेंज फल रे मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड अल्टीमेटली यू विल फाइंड राइज इन द सी लेवल या सी वाटर राइज हेले चांसेस होची कोन जो आइलैंड कंट्रीज गुडी को अछती से माने सबमर्ज हे जिबार भी चांसेस रहउची से माने सबमर्ज हे जिबार भी चांसेस रहउची तनु सेमानंकु अडाप्ट करिवा पई मिटिगेशन करिवा पई जेमति सुनामी देखिबा को मिलुची ई सब जिंस को हैंडल करिवा पई आमे चेष्टा करूछु कोन ग्रीन क्लाइमेट फंड राइट ग्रीन क्लाइमेट फंड So answer is of course correct. Second is the Green Climate Fund is established under the aegis of UNEP, OECD, Asian Development and World Bank. So of course not. So जो UNFCCC अच्छी Green Climate Fund is governed by the UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, not under the aegis of UNEP, OECD, Asian Development Bank or World Bank. Okay. So answer is A one only. मन रखते बेटा ग्रीन क्लाइमेट फंड काफी टाइम आगु पचरा भी जाइए which of the following international organizations are responsible for estimating and measuring poverty वर्ल्ड बैंक मेजर करे पॉवर्टी yes UNDP मेजर करे पॉवर्टी yes ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर करे यस सो आंसर होची कोन डी 1213 ठीक अछि एक्सप्लेनेशन देखिबा वर्ल्ड बैंक प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड मेजरिंग पॉवर्टी ग्लोबली particularly its poverty lines and poverty gap index UNDP is responsible for the global multidimensional poverty index and जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मध्य responsible for the calculating multi-dimensional poverty index. Which of the following poverty alleviation programs in India are aimed at creating employment opportunities in the rural area? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNRGA, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP तीनटा स्कीम अछि फर्स्ट अछि MGNRGA से कोन कहूची एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरिया रे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की प्रोवाइड करिवो 100 days रो वर्क MGNRGA डेफिनेटली इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम रे भी अछि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सेटा स्किल डेवलपमेंट पाई ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट पाई नुहे या एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली दबा पाई नुहे सेटा होची स्किल डेवलपमेंट पाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना does not directly create employment opportunities. Okay. Which of the following statements are correct regarding the global multidimensional poverty index?
It measures poverty based on income alone. मल्टी डायमेंशनल माने कौन आगुरु जमती आगुरु देखा जाउतला कौन ना the reason behind the poverty is lack of adequate income. The reason behind the poverty is lack of adequate income. But under the multi-dimensional poverty index, not only income but there are other factors as well जहाँ फलरे multi-dimensional poverty index बोली हमें कहूचे. So the reasons behind poverty is not income only rather than other factors as well. जंती की हमें डिस्कस करूचे कि बेटर एजुकेशन फैसिलिटी हो, बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज हो, ये सब आपनकर कोन मल्टी डायमेंशनल रो एस्पेक्ट गुडी को. ठीक अछि. तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आपण इनकरेक्ट कहि परिबे. इट ट्रैक्स डेप्रिवेशन अक्रॉस 3 डायमेंशन. को डायमेंशन गुडी को एजुकेशन, health and standard of living. Okay, multidimensional poverty. It replaced the human poverty index. तो आंसर होची आपनकर कोन बी रहिबो 2 and 3 only. फर्स्ट देखंतु the global multidimensional poverty index does not measure poverty based on income alone. It uses multiple dimensions: health, education and standard of living. It भी सेटा मेंशन अछि. The global multidimensional poverty index replaced the human poverty index which was used earlier by the UNDP to measure poverty. जोटा कि आगुरु UNDP द्वारा सेटा को यूज करा जायथिला to measure poverty. Which of the following causes of poverty is directly linked to the inadequate access to education and health care? Inadequate access to education and health care. Poverty saith directly linked. Okay. Low rate of economic development, lack of good jobs or job growth, lack of education and lack of good health care. Okay. Lack of good jobs or job growth, lack of education and lack of good health care. प्रश्न कौन पचार डायरेक्टली लिंक टू इनएडिक्वेट एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. डायरेक्टली लिंक्ड आप देखिए इनएडिक्वेट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर तो ऑब्वियसली एटा होची लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ गुड हेल्थ केयर. कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. ओके. लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड lack of good jobs या job growth, they are not directly linked to poverty. Causes of poverty is directly linked to inadequate access of education and health care. तो इटा directly जदियो नुहे but low rate of economic development अछि गोटे factor behind the poverty. Okay, but directly नुहे तेणु आंसर आपण D बोली कहि परिबे 3 only. Lack of education and lack of health care, direct causes of poverty. Without education, people cannot improve their skill, employability, and poor health leads to inability to work and increased medical expenses. 1 and 2 are indirect causes of poverty, but they are not directly related to education and health care. Next. Consider the following statements regarding history and development of Sustainable Development Goals. History and development of Sustainable Development Goals. So let's see. First one, the Birkeland Commission established in 1983 defined sustainable development as meeting the needs of the present without compromising the ability to future generations to meet their own needs. तो बर्कलैंड कमिशन ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रथम थर पई डिफाइन करथिला 1983 रे. बर्कलैंड कमिशन ही प्रथम थर पई डिफाइन करथिला 1983 रे. The sustainable development goals were first proposed by the Club of Rome 1972. तो obviously no, कारण प्रथमे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थिला 15 रु आपनकर सॉरी 2000 रु 2015 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तापर 15 रु 30 हला आपनकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स.
ये स्टेटमेंट आपनकर इनकरेक्ट, ये होची करेक्ट। देखिए ना टिके एक्सप्लेनेशन। The Butland Commission, which was formed 1983, introduced the widely accepted definition of sustainable development, emphasizing the balance between meeting present needs and ensuring the ability of future generations to meet theirs. So, use sustainable development definition. Number one. Number two, the SDGs were not proposed by the Club of Rome in 1972. The SDGs were officially established in 2015 with roots in the earlier development of Millennium Development Goals from 2000 UN Millennium Summit. The Club of Rome's 1972 report, The Limits to Growth, did influence early discussions, sustainability, but it did not propose SDG. तो ये information additionally अपन को मिलुची चेष्टा करिवे जानिबा पई कि 2000 रे यूएन रो मिलेनियम समिट जो होइतला सेटी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स गुडिका आसला 2000 रु 2015 15 रु 30 जोटा हला सेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बट क्लब ऑफ रोम रे जोटा थला लिमिट्स टू ग्रोथ डिड इन्फ्लुएंस अर्ली डिस्कशंस ऑन सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट देखिबा which of the following is true about the transition from the Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals? Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals. First, the SDGs replaced the MDGs and were adopted in 2015 as part of the UN Agenda 2030. SDG केबे आसिला 2015 रे आसिला 15 रु 30 को टार्गेट करके SDG, MDG थिला 2000 रु 2015 तो obviously replaced MDGs were adopted in 15 as part of the UN's Agenda 2030. MDGs focused on environmental issues while SDGs address a broader range of issues including social, economic and environmental dimension. सेतपय आपण देखिबे SDG रो गोल्स गुडिको काफी अधिक अछि 17 गोल्स आपण देखिबे SDG रे तेनु ब्रॉडर इश्यूज को टार्गेट करूछि जोटा कि MDG केवल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को टार्गेट करूथला। आंसर जदियो दुईटी जगह करेक्ट। थर्ड सेकंड स्टेटमेंट देखंतु while MDGs mainly focuses on eradicating poverty, addressing specific issues like education, health, gender equality, SDG take a more holistic approach by integrating social, economic, environmental dimension and sustainable development. So SDG is more broader than MDG बोली आपण कहि परिबे। What is the primary aim of Rio Plus 10 2002 World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg? Answer करंतु यार। What is the primary aim of the Rio Plus 10 2002 World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg? Answer please. Simply Rio Plus 10 2002 कौन थिला ना 1992 रे जो अर्थ समिट हेतला ताको रिव्यू करिबा पई से पई प्लस 10 2002 ना दिया हेतला प्लस 10 2002 okay so to review progress on implementing the principles of the earth summit 1992 and agenda 21 से पई रियो प्लस 10 2002 करिके ना दिया हेतला रियो प्लस 10 2002 करिके ना दिया हेतला। Okay, so answer is A. देखि परिबे एठी जोहान्सबर्ग रे 2002 रे अर्थ समिट हेतला 1992 रे एडवांसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ग्लोबली। आपण चाहिले ये जो एक्सप्लेनेशन सहित फाइल को भी दे देबी आपण टेलीग्राम चैनल को जाई कि नहीं परिबे। With reference to sustainable development goals, which of the following statements are correct? Which of the following statements are correct? देखिबा first होची SDGs are a collection of 17 global goals and 169 targets set by the United Nations General Assembly in 2015 for the year 2030. Just आमे डिस्कस करूथिले 17 गोल्स अछि 169 टार्गेट्स अछि गोल्स गुडी को मन रखिबे बारंबार अपन कहिजी 17टी गोल को मन रखि नेबे 169 टार्गेट्स so the statement is correct. The SDGs focus only on environmental sustainability and do not address social or economic issues. Obviously answer होची incorrect कारण
ब्रॉडर इश्यूज को एसडीजीज कवर करूची हमें देखिले एमडीजी थारु एसडीजी होउची आउरी ब्रॉडर सो आंसर होउची आपनकर ए दैट इज वन ओनली ओके SDGs consisting of 17 goals, 169 target. UN General Assembly 2015 as a part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. These goals aim to address global challenges such as poverty, inequality, climate change, environmental degradation, and peace. Two is incorrect. The SDGs address a broader range of issues, including socio-economic, environmental dimension. Okay, the aim is to promote inclusive, equitable development, eradicate poverty, ensure gender equality, and promote peace among the other objectives. Next, National Career Service Scheme aims to what? National Career Service Scheme aims to what? Telegram channel mu last ko koi devi. You just once we end this video, last ko apno koi devi. Answer it kono? Now match job seekers with potential employers through an online platform. Match job seekers with potential employers through an online platform. So that is National Career Service Scheme ro main objective. Provides an online platform where job seekers can connect with the potential employers. तेणु आपनकर जो जमती आपण देखिबे नौकरी.com जमती अछि नौकरी.com से टाइप रो क्लास रो नोटिफिकेशन आसुनी सब्सक्राइब करंतु नोटिफिकेशन आसीबो बोधे ओके सो आंसर इज ऑफ कोर्स बी Which of the following is a major cause of unemployment in India? Major cause of unemployment in India. Lack of technological advancement, slow industrial growth, high urbanization rate, decreased population growth. Answer होची slow industrial growth. तो इंडस्ट्री अधिका अब्जॉर्व करिवारो लेबर फोर्स को अब्जॉर्व करिवारो या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करिवारो कैपेसिटी कहार अछि इंडस्ट्री रे अछि जदि इंडस्ट्री ग्रो करिवो नाही तो एम्प्लॉयमेंट सेते जनरेट ही परिवो नाही slow industrial growth leads to fewer job opportunities in the industrial and manufacturing sectors, contributing significantly to unemployment. While technological advancement can cause technological unemployment, the primary cause discussed here is a slow industrial growth. What is the main objective of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme? Mahatma Gandhi, main objective of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, answer is to guarantee 100 days of employment for the rural individuals. 100 days of employment of rural individuals. Okay, MGNRG. Which type of unemployment is most commonly found in the agricultural and unorganized sectors of India? Agricultural and unorganized sectors of India. So obviously answer is disguised unemployment, disguised more than the required amount. Cyclical means what? Cyclical means when there is an inflation, more employment generation, recession, lesser employment generation. Technological unemployment, with the advanced technology, few individuals, they cannot adapt to the new technology. जमती suppose रेलवे रे देखिबे आपण रेलवे रे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए चेंज हुए जो पुराना जो एम्प्लॉइज माने थांदी सेमान तो अडॉप्ट करि परंत नाही सो दे टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट और दे सिंपली लूज देयर जॉब राइट तो सेत पे आपण कहि परिबे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल सेमती देखिबे एग्रीकल्चर देखंतो आपण जदि आपण एग्रीकल्चर गोटी क्रॉप करूछन मोनो क्रॉपिंग तो एग्रीकल्चर अच्छी तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलला तो एग्रीकल्चर नाही आपण पाखे एम्प्लॉयमेंट नाही बाकी टाइम बसिक आपण ताश खेलिबे यू आर प्लेइंग कार्ड्स तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोली ताको कहा जाए ओके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो एटा को मन रखते बड़े बड़े प्रश्न आसे Which of the following causes of unemployment in India is related to mismatch between available job opportunities
and the skill possessed by workers. माने जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी बट जेहेतु आपण पाखरे से स्किल नाही या एलिजिबिलिटी नाही से स्किल आपण पाखरे नाही जेमती नारायण मूर्ति कहले कि 80% ऑफ आवर इंजीनियर्स जो माने पास आउट करूछन डू नॉट हैव मार्केट स्किल राइट तेणु से जिनसटा कौन जो स्किल रो रिक्वायरमेंट अच्छी से स्किल तांग पाखरे नाही दैट मीन्स इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ व्हाट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. It's a problem of structural unemployment. Okay. Structural unemployment arises when there is a mismatch between the skill possessed by workers and the job opportunities available in the market. This is a significant problem in India where many workers, especially in the rural areas, lack the necessary skills for the modern industries. Okay. That's it. You can access Telegram channel through this. एटा को आपण स्कैन करिकी Telegram channel आपण को मिल जिवो. कैमरा स्कैनर स्कैन करिवे Telegram channel को एक्सेस करि परिवे. अदरवाइज Telegram channel होची जटाधारी सर फॉर यू करिकी सेठी आपण जॉइन करि परिवे. ओके बाकी आपण माने जानि छै हमर फाउंडेशन कोर्स भी चलची तनो फाउंडेशन कोर्स रे यदि जॉइन करबा को चाहउछन्ती वॉरियर बैच रे जॉइन करबा पई एप्लीकेशन को जाई के आपण जॉइन करि परिबे এবং कोड यूज करिवे to get maximum discount Y962 to get the maximum discount. A and D रे difference नहीं देखो ये होची टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये कंप्लीटली स्किल कथा कहूची कि छोटे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हला देनु तनु से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करि परला नै बट दिस वन इज कंप्लीटली डिफरेंट कंप्लीटली स्किल सेट ऑफ ता पखरे नाही से स्किल नै ओके सो दैट्स इट थैंक यू एंड एवरी अल्टरनेट डे 11 AM रे मु आपन पई सेशन नै कि आसुची अगर 9 AM थला बर्तन सेटा चेंज करी 11 AM करछु 11 AM रे आपन देखि परिबे थैंक यू because I just explained that A and D रो ताको एक्सप्लेन कली मु स्किल आउ टेक्नोलॉजी साइक्लिकल होची कोन साइक्लिकल होची सिंपली आपनकर जो इकोनॉमिक साइकिल अछि जेमती इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आउट होची रिसेशनरी या रिसेशन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ने कौन हुए इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ने चांसेस अच्छी मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कारण गोटे टाइम पे जो इंडस्ट्रीज माने अच्छी दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर कारण से मान को प्रॉफिट मिलुची प्रॉफिट पाई से कौन कर मोर प्रोडक्शन करूछन तो से समय रे बिट ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होतो रिसेशन समय रे कौन हबो ना अनएम्प्लॉयमेंट कारण प्रोडक्शन धीरे धीरे कमी कमी चलो लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट तेणु अनएम्प्लॉयमेंट देखा जीवार चांसेस अच्छी तो से रिसेशन आउ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन से आपन को ये सिचुएशन देखा जीव सेटा को साइक्लिकल बोली हमें को साइकिल इन्फ्लेशनरी सिचुएशन एंड देन द रिसेशनरी फिर रिकवरी एंड इन्फ्लेशन okay thank you